बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है विल्हेल्म कॉनरेड रोंटगन, द फादर ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। ही वाज बोर्न ऑन 27 March 1845 and died on 10 February 1923. He was a German mechanical engineer and physicist. On 8 November 1895, he produced and detected electromagnetic radiation, the X-rays, in a wavelength range known as X-rays or Roentgen rays, an achievement that earned him the inaugural Nobel Prize in Physics in 1901. 1901 में फिज़िक्स का पहला नोबल प्राइज़ रोंटगन को मिला था एक्सरे की डिस्कवरी के मामले में। In honor of Roentgen's accomplishments, in 2004, the International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC, जो कि यूनिट वगैरह तय करती है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के, named element 111 Roentgenium, a radioactive element with multiple unstable isotopes after his name. The unit of measurement, exposure or equivalent dose is also Roentgen. Basic education. He was born to Frederick Conrad Roentgen, a German merchant and cloth manufacturer, and the name of his mother was Charlotte Constanze Frovin. At age 3, his family moved to Netherlands where his mother's family lived. Roentgen attended high school at Utrecht Technical School in Utrecht, Netherlands. He followed courses at the technical school for almost 2 years. In 1865, he was unfairly expelled from high school when one of his teachers intercepted a caricature. Caricature होता है एक कोई खाका, कोई ड्रामा, कोई स्टेज प्ले जिसमें किसी को मौजू बनाकर उसका मजाक बनाया जाता है of one of the teacher, तो विच वॉज ड्रॉन बाई समवन एल्स, किसी और स्टूडेंट ने अपने टीचर का मज़ाहिया खाका बना के उसको मजाक उड़ाया था। तो लोग समझे थे कि रोंटगन ने किया है, तो उसको स्कूल से निकाल दिया था। उसके पास स्कूल का डिप्लोमा भी नहीं था, तो इस वजह से वो किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में अप्लाई नहीं कर सकता था। विदाउट ए हाई स्कूल डिप्लोमा, रोंटगन कुड ओनली अटेंड यूनिवर्सिटी इन द नेदरलैंड एज ए विजिटर। रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर वो नहीं कर सकता था एडमिशन। In 1865, he tried to attend Utrecht University without having the necessary credentials required for a regular student. Upon hearing that he could enter the Federal Polytechnic Institute in Zurich, today known as the ETH Zurich, he passed the entrance examination and began his studies there as a student of mechanical engineering. In 1869, he graduated with a PhD from the University of Zurich. Once there, he became a favorite student of the Professor August Kundt, whom he followed to the newly founded German Kaiser Wilhelm Universität in the Strasbourg. Career उसने शुरू किया in 1874. Roentgen became a lecturer at the University of Strasbourg. In 1875, एक साल के बाद, he became a professor at the Academy of Agriculture at Hohenheim, Württemberg. ये वुर्तमबर्ग इलाके का नाम है। He returned to Strasbourg as a professor of physics in 1876, and in 1879 he was appointed to the chair of physics at the University of Gießen. In 1888 he obtained the physics chair at the University of Würzburg, and in 1900 at the University of Munich by special request of the Bavarian government, और फिर म्यूनिक में वो सारी ज़िंदगी उधर ही रहा। Roentgen had family in Iowa in the United States and planned to immigrate. अमेरिका में वो इमिग्रेट होना चाहता था, ट्रांसफ़र होना चाहता था। He accepted an appointment at Columbia University in New York City and bought transatlantic tickets before the outbreak of World War I changed his plans. World War I की वजह से वो नहीं जा सका। He remained in Munich for the rest of his career. He was born on 27 March 1845 and died from carcinoma of the intestine, colorectal cancer,
on 10 February 1923. During 1895 at his laboratory, ये उसने जब एक्सरे डिस्कवर किए थे, in the Würzburg Physical Institute of the University of Würzburg, Roentgen was investigating the external effects from the various types of vacuum tubes equipment, apparatus from Heinrich Hertz, John Hittorf, William Crookes, Nikola Tesla एंड फिलिप वॉन लिनार्ड. ये सारे लोग ही ट्यूब्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. व्हेन एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज़ पास थ्रू दैम, तो फिर क्या होता है कि जब ट्यूब्स के अंदर से इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिस्चार्ज कराते हैं, गुजारते हैं, तो फिर क्या होता है. इन अर्ली नवंबर ही वाज रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट विद वन ऑफ लिनार्ड्स ट्यूब in which a thin aluminium window had been added to permit the cathode rays to exit at the tube, but a cardboard covering was added to protect the aluminium from damage by the strong electrostatic field that produces the cathode rays. एलुमिनियम की हिफाजत के लिए उसने कार्डबोर्ड और उसके दरमियान में एक होल बना दिया, विंडो बना दी. रोंजन knew that the cardboard covering prevented light from escaping. Yet he observed that the invisible cathode rays caused a fluorescent effect on a small cardboard screen painted with barium platinoxide when it was placed close to the aluminium window. जो कार्डबोर्ड उसने लगाया कि लाइट बाहर ना जाए, लेकिन जब उसने कार्डबोर्ड के ऊपर बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड की कोटिंग की तो उसमें से जब रेज़ पास की कैथोड रेज़ तो फिर लाइट आना शुरू हो गई, फ्लोरेसेंट लाइट. फ्लोरेसेंट का मतलब थोड़ी देर के बाद लाइट का एक झमाका होना. इट अकर टू रोंजन दैट द क्रूक्स हिटॉर्फ ट्यूब विच हैड अ मच थिकर ग्लास वॉल दैन द लिनार्ड ट्यूब माइट आल्सो कॉज दिस फ्लोरेसेंट इफेक्ट. उसने फिर ये तजर्बा उसने किया था लिनार्ड की ट्यूब पे. उसने फिर ये तजर्बा क्रूक्स और हिटॉर्फ के बारे में भी सोचा कि उनकी ट्यूबों में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो ग्लास वाल है काफ़ी ज़्यादा मोटी है. In the late afternoon of 8 November 1895, Roentgen was determined to test his idea. He carefully constructed a black cardboard covering similar to the one that he used on Linnard tube. उसने फिर Crookes Hittorf की ट्यूब पे तजर्बा किया. He covered the Crookes Hittorf tube with the cardboard and attached electrode to a Ruhmkorff coil. Ruhmkorff भी एक साइंटिस्ट का नाम है. To generate an electrostatic charge. Before setting up the barium platinoxide screen to test his idea, Roentgen darkened the room to test the opacity of his cardboard cover. उसने कमरे में अंधेरा कर दिया ताकि अगर लाइट थोड़ी सी झमाके मारे तो उसको नज़र आना चाहिए. As he passed the Ruhmkorff coil charge through the tube, he determined that the cover was light tight and turned to prepare for the next step of the experiment. लाइट टाइट कर दिया उसने, बिल्कुल अंधेरा कर दिया. इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट रोंजन नोटिस्ड अ फेंट शिमरिंग मतलब वेवरिंग लाइट, वेव की तरह लाइट ना, थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता चमके मारना. फ्रॉम ए बेंच आ फ्यू फीट अवे फ्रॉम द ट्यूब. ट्यूब से थोड़ी फीट दूर जो पड़ी थी कार्डबोर्ड, उसके ऊपर जो उसने लगाया हुआ था बेरियम प्लाटिनोसाइनाइड, वहाँ पे उसको वो झमाके होना शुरू हुए, नज़र आई, शिमरिंग लाइट नज़र आई. टू बी श्योर ही ट्राइड सेवरल मोर डिस्चार्जेस एंड सॉ द सेम शिमरिंग ईच टाइम ऑन द कार्डबोर्ड कोटेड विद बेरियम प्लाटिनोसाइनाइड. स्ट्राइकिंग a match, he discovered that the shimmering had come from the location of the barium platinoxide screen he had been intending to use next. उसने वो नेक्स्ट यूज़ करनी थी, लेकिन वो इतना दूर पड़ी थी तब भी वहाँ से शिमरिंग लाइट आ रही थी. Roentgen speculated that a new kind of ray might be responsible. 8 November 1895 was a Friday, so he took advantage of the weekend to repeat his experiment and he made his first notes. In the following weeks, he ate and slept in his laboratory as he investigated many properties of the new X-rays. He temporarily termed as X-rays X for unknown, using the mathematical designation X for something unknown. जिस तरह हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया हुआ हमारा सोचा हुआ आदत X है. The new rays came to bear his name in many languages as Roentgen rays and associated X-ray radiograms as Roentgenograms. At one point,
While he was investigating the ability of various materials to stop the rays, Ranjan brought a small piece of lead into the position while a discharge was occurring. उसने दरमियान में lead रखा जब discharge कर रहा था. Ranjan saw the first radiographic image, his own flickering ghostly skeleton on the barium platinocyanide screen. क्योंकि एक्सरे का सोर्स जिस तरह आज हम कोलीमेटर इस्तेमाल करते हैं उस तरह का तो नहीं था उसका, वो एक्सरेज हर तरफ फैल रही थी, तो जहाँ पे स्क्रीन रखी थी वहाँ पे उसका अपना स्केलेटन नज़र आना शुरू हो गया था. He later reported that it was at this point that he decided to continue his experiment in secrecy, fearing for his professional reputation if his observation were in error. कि अगर उसको डर हो गया था कि अगर ये बाद में सब लोगों के सामने ये झूठ भी निकला तो उसकी अपनी जो उसकी लेगेसी है वो ख़राब हो जाएगी, प्रोफेशनल रेपुटेशन उसकी ख़राब होगी कि ये झूठ बोल रहा है और ये किस तरह की बातें करेगी, मैंने इनर स्केलेटन देख लिया है. About 6 weeks after his discovery, he took a picture, a radiograph using X-ray of his wife Anna Bertha's hand. When she saw her skeleton, she exclaimed, I have seen my death. He later took a better picture of his friend Albert von Kolliker's hand at a public lecture. Röntgen's original paper on a new kind of rays was published on 28 December 1895. On 5 January 1896, an Austrian newspaper reported Röntgen's discovery of a new type of radiation, which was named X-rays. Röntgen was awarded an honorary Doctor of Medicine degree from the University of Würzburg. After his discovery, he also received the Rumford Medal of the British Royal Society in 1896 jointly with Philip Lenard, जिसकी ट्यूब पे वो पहले काम कर रहा था, who had already shown that a portion of the cathode rays could pass through a thin film of metal such as aluminum. Röntgen published a total of 3 papers on X-rays between 1895 and 1897. Today, Röntgen is considered the father of diagnostic radiology, the medical specialty which uses imaging to diagnose disease and inner imaging. A collection of his paper is held at the National Library of Medicine in Bethesda, Maryland. अब हम उसकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हैं. Röntgen was married to Anna Bertha Ludwig for 47 years until her death in 1919 at the age of 80. In 1866, they met in Zurich at Anna's father's cafe, Zum Grünen Glas. They got engaged in 1869 and were wed in Apeldoorn, Netherlands on 7 July 1872. The delay was due to Anna's being 6 years Wilhelm's senior and his father not approving of her age or humble background. वो उससे 6 साल बड़ी थी, इसलिए उसका जो फादर था एना का वो नहीं मान रहा था इससे शादी करने के लिए, और वो ये रोंजन को इतना ज़्यादा अमीर भी नहीं था. Their marriage began with financial difficulties as family support from Röntgen has ceased. उसके बाप ने, उसके ख़ानदान ने उसकी इमदाद रोक ली. They raised one child, उसका अपना नहीं था, एना के भाई की बेटी थी, Josephine Bertha Ludwig, whom they adopted at age 6 after her father, Anna's only brother, died in 1887. First medical X-ray by Wilhelm Röntgen was of his wife Anna Bertha Ludwig Kaiser, Ludwig's hand. X-ray of Albert von Kolliker's hand. He inherited 2 million Reichsmarks, जो उस वक्त की जर्मन करेंसी होती थी, after his father's death. For ethical reasons, Röntgen did not seek patents for his discoveries, holding the view that they should be publicly available without charge. उसने अपने कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं रखी अपनी रिसर्च की, उसने कहा जो भी इससे फ़ायदा उठाना चाहे उठा ले. After receiving his Nobel Prize money, Röntgen donated the 50,000 Swedish krona to research at the University of Würzburg. With the inflation following World War I, Röntgen fell into bankruptcy, spreading. With the inflation following World War I, Röntgen fell into bankruptcy. बैंक का कर्जदार हो गया. Spending his final year at his country home at Wilhelm near Munich, Röntgen died on 10 February 1923 from carcinoma of the intestine, also known as colorectal cancer. In keeping with his will,
All his personal and scientific correspondence were destroyed upon his death. He was member in the Dutch Reformed Church. Honors and awards. In 1901, Ranjan was awarded the first Nobel Prize in Physics. The award was officially in recognition of the extraordinary service he had rendered by the discovery of the remarkable rays subsequently named after him, Roentgen rays, या फिर बाद में वो मशहूर हो गई एक्स-रेज. Roentgen donated the 50,000 Swedish krona rewarded from his Nobel Prize to research at his university, the University of Würzburg. Like Marie Curie and Pierre Curie, Roentgen refused to take out patents related to his discovery of X-rays. उसने कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं लिए कि कॉपीराइट के मुझे पैसे दिए जाएं. उसने बल्कि अपनी रिसर्च ओपन कर दी पब्लिक के लिए. As he wanted society as a whole to benefit from practical application of the phenomenon. अब उसके मुख्तलिफ अवार्ड्स हैं. Roentgen was also awarded Bernard Medal for meritorious service to science in 1900. His honors include Rumford Medal, Matteucci Medal, Elliott Crescent Medal, Nobel Prize for Physics in 1901. In November 2004, IUPAC named element number 111 Röntgenium in his honor. Ruud Roentgen Street at CERN, Geneva, Switzerland, officially registered 2013. In 1907, he became a foreign member of the Royal Netherlands Academy of the Arts and Science. Legacy. Today in Ramschied Lennep, 40 kilometers east of Roentgen's birthplace in Dusseldorf, is the Duchess Roentgen Museum. In Würzburg, where he discovered X-rays, a non-profit organization maintains his laboratory and provides guides tour to the Roentgen Memorial Site. World Radiography Day. World Radiography Day is an annual event promoting the role of medical imaging in the modern healthcare. It is celebrated on 8 November each year, coinciding with the anniversary of the Roentgen discovery. 8 नवंबर को उसने क्योंकि एक्सरे डिस्कवर किए थे तो 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे मनाया जाता है. कोई कोई उसको रेडियोग्राफी डे भी कहते हैं. It was first introduced in 2012 as a joint initiative between the European Society of Radiology, the Radiological Society of North America, and the American College of Radiology. Roentgen Peak in Antarctica is named after Wilhelm Roentgen. Minor planet 6401 Roentgen is named after him. Wilhelm Conrad Roentgen was born on March 27, 1845 at Lennep in the Lower Rhine province of Germany as the only child of a merchant and manufacturer of cloth. His mother was Charlotte Constanze Forveen, ये मैं पहले बता चुका हूँ, of Amsterdam, Netherlands, a member of an old Lennep family which had settled in Amsterdam. When he was 3 years old, his family moved to Apeldoorn in the Netherlands, where he went to the Institute of Martinus Herman van Doorn, a boarding school. He did not show any special aptitude, but showed a love of nature and was fond of roaming in the open country and forest. He was specially apt at making mechanical contrivances, मतलब equipment वगैरह, a characteristics which remained with him also in later life. उसने जो भी तजर्बे किए उसने अकेले किए. वो बड़ा शाई होता था, उसने कोई असिस्टेंट नहीं रखा, सारे काम अपने खुद करता था, मतलब कि अपने पुर्जे बनाता भी खुद था, फिर उनको सेटल भी खुद करता था. In 1862 he entered the technical school at Utrecht, कोई इसको उत्रेक्ट बोलते हैं, कोई इसको यूट्रेक्ट बोलते हैं, where he was however unfairly expelled. ये मैं पहले बता चुका हूँ कि वो जो कैरिकेचर बनाया था टीचर का. He then entered the University of Utrecht in 1865 to study physics, not having attained the credentials required for regular student. मैं पहले बता चुका हूँ कि उसको स्कूल से निकाल दिया था तो वो रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे नहीं पढ़ सकता था. He attended the lecture given by Clausius and also worked in the laboratory of Kundt. Kundt भी एक साइंटिस्ट का नाम है. Both Kundt and Clausius exerted great influence on his development. In 1869 he graduated PhD at the University of Zurich, was appointed assistant to Kundt and went with him to Würzburg in the same year, and 3 years later to Strasbourg.
In 1874, he qualified as lecturer at Strasbourg University, and in 1875, he was appointed professor in the Academy of Agriculture at Hohenheim in Württemberg. In 1876, he returned to Strasbourg as professor of physics, but 3 years later he accepted the invitation to the chair of physics in the University of Gießen. After having declined invitation to similar position in the University of Jena 1886 and Utrecht in 1888, he accepted it from the University of Würzburg 1888, where he succeeded Kohlrausch and found among his colleagues Helmholtz and Lorentz. In 1899, he declined an offer to the chair of physics in the University of Leipzig, but in 1900 he accepted it in the University of Munich by special request of the Bavarian government as successor of E. Lommel. फिर वो वहाँ पे पूरी ज़िंदगी रहा. Here he remained for the rest of his life, although he was offered but declined the presidency of Cyclisch Technische Riedstadt at Berlin and the chair of physics of the Berlin Academy वगैरह वगैरह. Roentgen's first work was published in 1870 dealing with the specific heats of gases, followed a few years later by a paper on the thermal conductivity of crystal. उसकी और भी रिसर्चेज हैं, लेकिन सबसे जो मेन काम है उसका ये एक्सरे की डिस्कवरी है, जो कि 1895 के आखिर में हुआ था. Among other problems, he studied the electrical and other characteristics of quartz, the influence of pressure on the refractive indices of various fluids, the modification of the planes of polarized light by electromagnetic influences, the variations in the function of the temperature and the compressibility of water and other fluids, the phenomena accompanying the spreading of oil drops on water. ये उसकी मुख्तलिफ रिसर्चेज हैं. Roentgen's name, however, is chiefly associated with his discovery of the rays that he called X-rays. In 1895, he was studying the phenomena accompanying the passage of an electric current through a gas of extremely low pressure. Previous work in his field had already been carried out by J. Plucker, J. W. Hittorf, C. F. Worley, E. Goldstein, Sir William Crookes, A. William Crookes और हिटॉर्फ की ट्यूब पे उसने एक्सपेरिमेंट करके ही एक्सरे डिस्कवर किए थे. H. Hertz and Philip von Lienard, पहले उसने तजर्बे लिनार्ड की ट्यूब पे किए थे जो कि उसके इतने ज़्यादा कामयाब नहीं गए. फिर उसने हिटॉर्फ और विलियम क्रूक की ट्यूब पे तजर्बे करके एक्सरे डिस्कवर किए. एंड बाय द वर्क ऑफ दीज साइंटिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, द नेम गिवन टू गोस्टाइन to the electric current established in highly rarefied gases by the very high tension electricity generated by Ruhmkorff induction coil had become well known. On the evening of November 8, 1895, he found that if the discharge tube is enclosed in a sealed thick black carton to exclude all light, and if he worked in a dark room, a paper plate covered on the side with barium platinum placed in the path of the rays became fluorescent even when it was as far as 2 meters from the discharge tube. कि अगर बेशक वो एक कार्डबोर्ड के ऊपर बैरियम प्लेटिनम साइनाइड लगा दे या किसी प्लेट के ऊपर लगा दे, तो जब डिस्चार्ज करेंगे कैथोड रेज को तो वो लाजमी झमाके से चमकेगी, वेवरिंग लाइट वगैरह आएगी या फ्लोरेस करेगी. During subsequent experiments, he found that objects of different thickness interposed in the path of the rays showed variable transparency to them when recorded on a photographic plate. कि अगर मुख्तलिफ एलिमेंट दरमियान में लाए जाएँ, मुख्तलिफ चीज़ें डिस्चार्ज ट्यूब और बैरियम प्लेटिनम साइनाइड वाली प्लेट के दरमियान में लाए जाएँ तो हर एक का इमेज अलग आता है, ट्रांसपेरेंसी उनकी अलग शो होती है. ग्लास लाएंगी तो उसकी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी शो होगी. अगर कोई पतला सा लाइक कोई बारीक सी एक पेन लाएंगे तो उसकी अलग से शो होगी. On December 1895, when he immobilized for some moment the hand of his wife in the path of the rays over a photographic plate, he observed an image of his wife's hand which showed the shadow thrown by the bones of her hand and that of a ring she was wearing surrounded by the penumbra of flesh. penumbra मतलब उसका शेडो ही है फ्लैश लाइट का. which was more permeable to the rays and therefore threw a fainter shadow. उस पेनम्बरा ने जो लाइट का शेडो था उसने हल्का शेडो डाला क्योंकि वो लेस ट्रांसपेरेंट है, और जो उसका हाथ है वो तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसका शेडो अलग से. दिस वाज द फर्स्ट रोएंजेनोग्राम एवर टेकन. और ये काम उसने 22 दिसंबर 1895 में किया था.
8 नवंबर को उसने एक्सरे डिस्कवर किए। बाकी सारे दिन वो तजर्बात करता रहा। 22 दिसंबर को उसने अपनी वाइफ का हाथ दरमियान में रखा और उसका इमेज लिया, जो एक वर्ल्ड वाइड फेमस एक्सरे है, वो भी अभी दिखाता हूँ मैं आपको। In further experiments, Ranjan showed that the new rays are produced by the impact of cathode rays on a material object. Material object कोई जिसको आज हम टारगेट लगाते हैं टंगस्टन। Because their nature was then unknown, he gave them name X-rays. Later, Max Born and his pupils showed that they are of the same electromagnetic nature as light, but differ from it only in the higher frequency of their vibration. Numerous honors were showered upon him in several cities. Streets were named after him and a complete list of prizes वो पहले ही बता चुका हूँ मैं। In spite of all this, Ranjan retained the characteristics of a strikingly modest and decent man। एक मतलब नॉर्मल से आदमी की ज़िंदगी गुजारी उसने। Throughout his life, he retained his love of nature and outdoor occupation. Many vacations were spent at his summer home at Wilhelm at the foot of the Bavarian Alps, where he entertained his friends and went on many expeditions into the mountain। वो mountaineer बहुत अच्छा था। Amiable and courteous by nature, he was always understanding the views and difficulties of others। He was always shy of having an assistant and preferred to work alone। Much of the apparatus he used was built by himself with great ingenuity and experimental skill, क्योंकि वो खुद मैकेनिकल इंजीनियर था। रंजन मैरिड, उसकी शादी एना बर्था से हुई, पहले उस स्टोरी भी बता चुका हूँ। वो उससे 6 साल बड़ी थी। दे मैरिड इन 1872 इन एप्पलडून, नेदरलैंड्स। उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे। एना बर्था का जो भाई था उसकी एक बेटी थी 6 साल की उम्र में। 1887 में उसको इनने गोद लिया था। 4 ईयर आफ्टर हिज वाइफ रंजन डाइड एट म्यूनिक। 1919 में उसकी वाइफ मरी थी, तो 1923 में ये खुद भी कोलोरेक्टल कैंसर से फौत हो गए। एक्सरे वर डिस्कवर्ड इन 1895 बाय विल्हेल्म कॉनराड रंजन, who was a professor of Würzburg University in Germany, working with a cathode ray tube in his laboratory। रंजन observed a fluorescent barium platinum वाली प्लेट पे उसने किया था glow of crystal on a table near his tube। The tube that Ranjan was working with consisted of glass envelope with positive and negative electrode encapsulated in it। वो ट्यूब थी टॉर्फ क्रूक्स की ट्यूब थी। The air in the tube was evacuated and when a flash of high voltage was applied, the tube produced a fluorescent glow। Ranjan shielded the tube with heavy black paper and discovered a green colored fluorescent light generated by the material located a few feet away from the tube। उसके ऊपर उसने barium platinum cyanide लगाया था। He concluded that a new type of rays were being emitted from the tube। This ray was capable of passing through the heavy paper covering and exciting the phosphorescent material in the room। Phosphorescence का मतलब कि काफ़ी लेट तक वो झमाके मारते रहना लाइट का। He found that the new ray could pass through most substances casting shadow of solid objects, के उसके रास्ते में कोई ट्रांसपेरेंट जिसको आजकल हम रेडियो ओपेक कहते हैं उनका शेडो आ जाएगा। Ranjan also discovered that the ray could pass through the tissue of humans but not bones and metal objects। उनमें absorb हो जाती है। One of Ranjan's first experiment late in 1895 was a film of the hand of his wife Anna Bertha। और जो अच्छा इमेज उसने सबके सामने लिया था, मतलब एक जलसे के दौरान ऐसे कह लें या कोई रिसर्च की कोई पार्टी हो रही उसके दरमियान वो उसके दोस्त को लेकर का एक्सरे था। It is interesting that the first use of X-ray was for an industrial, not medical application, as Ranjan produced a radiograph of a set of weights in a box to show his colleagues। तजर्बे के दौर पे उसने ऐसे किया था। ये उसकी वाइफ का है मशहूर ज़माना एक्सरे, रिंग भी उसने पहनी हुई है। विल्हेल्म रंजन, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन वुर्जबर्ग बवेरिया, डिस्कवर्ड एक्सरे इन 1895। एक्सीडेंटली उसने किया था वाइल टेस्टिंग वेदर कैथोड रेज कुड पास थ्रू ग्लास। वही क्रूक्स हिटॉफ ट्यूब। हिज कैथोड ट्यूब was covered in heavy black paper, so he was surprised when an incandescent green light nevertheless escaped and projected onto a nearby fluorescent screen।
स्क्रीन वगैरह की कोई नहीं थी उस वक्त, वही बेरियम प्लेटनाइट साइनाइड वाला पेपर जो तो उसने कार्डबोर्ड के ऊपर लगाया हुआ था वही था. दो एक्सपेरिमेंटेशन ही फाउंड दैट द मिस्टीरियस लाइट वुड पास थ्रू मोस्ट सब्सटेंसेस बट लीव शेडो ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. ये वही मिसाल है कि हाथ के जो मसल्स वगैरह हैं, फैट वगैरह, उनसे गुजर जाता है और उसके जो हड्डियाँ हैं उसमें अब्जॉर्ब हो जाती है तो उनका शेडो आ जाता है. रेडियोलूसेंट और रेडियो ओपेक का जो कंसेप्ट है. बिकॉज ही डिड नॉट नो व्हाट द रेज वर ही कॉल्ड देम एक्सरे मीनिंग unknown. Runjan quickly found that X-ray would pass through human tissue too, rendering the bones and tissue beneath visible. News of his discovery spread worldwide, and within a year, doctors in Europe and the United States were using X-ray to locate gunshots, bone fractures, kidney stones, and swallowed objects, वगैरह वगैरह. Honors for his work poured in, including the first Nobel Prize in 1901. Clinical use of X-ray flourished with little regard for पोटेंशियल साइड इफेक्ट फ्रॉम रेडिएशन एक्सपोजर. उस वक्त किसी को पता ही नहीं था कि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, बस धड़ाधड़ क्लिनिकल उसका शुरू हो गया इस्तेमाल. देयर वर अ फ्यू अर्ली सस्पिशन फ्रॉम साइंटिस्ट इंक्लूडिंग थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, विलियम जे मोर्टन, ईच ऑफ हुम रिपोर्टेड इंजरीज दे बिलीव्ड रिजल्टेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स विद एक्सरेज. जिस तरह पहले न्यूक्लियर का भी किसी को नहीं पता था, जो रेडियो एक्टिव, जिस तरह मैरी क्यूरी के जो पेपर हैं रेडियो एक्टिव हैं. बट ओवरऑल अर्ली यूज़ ऑफ एक्सरे वर widespread and unrestrained, even to the degree that during 1930s 1940s shoe stores offered free x-rays so that customer could see the bones in their feet. शू स्टोर ने सेल लगा दी कि आएँ अपने पाँव की अंदर वाली हड्डियाँ देखें और फिर शूज़ ले जाएं. We now have a far better understanding of the risk associated with x-rays today and हैव डेवलप प्रोटोकॉल टू ग्रेटली मिनिमाइज अननेसेसरी एक्सपोजर. आजकल हमें सब कुछ पता है तो हम लेड एप्रन वगैरह भी पहनते हैं और दीवारों में भी लेड वगैरह लगाते हैं, लेड शीशे इस्तेमाल करते हैं लेड ग्लास सीटी करते हुए. एंड वाइल एक्सरे रिमेन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन, देयर डिस्कवरी पेव्ड द वे ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टुडेज ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इमेजिंग टेक्निक इंक्लूडिंग एमआरआई में इस्तेमाल नहीं होते खैर, सीटी, अल्ट्रासाउंड, इको एंड मैनी अदर, सम ऑफ विच अवॉइड द यूज़ ऑफ रेडिएशन ऑल टुगेदर. सीटी, एक्सरेज, एंजियोग्राफी, इनमें एक्सरे इस्तेमाल होते हैं. नॉट ए बैड लेगेसी फॉर एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ रोंजन.